Last takeout. What would we have done if we were in India right now? Now, there are three options. Hey guys, welcome back to our channel. Not so good news from IRCC right now. बहुत लोगों को पता होगा if you follow Kuber sir on social media, and अगर नहीं पता तो basically IRCC issued in a memorandum that has been going around for 2 days now. तो आज की वीडियो में हम पहले कुछ मिनट्स डिस्कस करेंगे अबाउट दिस मेमोरेंडम एंड व्हाट इट मींस, बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट प्रॉब्लम्स. वी नो कि ड्रॉज नहीं आ रहे एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट दिस वीडियो विल बी अबाउट सॉल्यूशंस, व्हाट टू डू नेक्स्ट, बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन स्टेटिंग जस्ट द प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स व्हाट दिस वीडियो विल नॉट बी अबाउट. So stay tuned and watch this video till the end, because by the end of this video we would have outlined a possible outcome for all of you who are watching this video. So let's get started. सो ये मेमोरेंडम बहुत सारे लोगों ने देखा होगा. मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक पॉइंट को. सो पहले वाले पॉइंट में दे हैव सेड दैट इट्स अ पॉज टिल एंड ऑफ 2022, एंड ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि इट्स अ पॉज फॉर एवर. सो बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि ये हमेशा के लिए बंद हो गया है. येस, देयर आर सर्टन इम्प्लीकेशंस जो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट इट्स नॉट अ पॉज फॉर एवर. दूसरी चीज़, जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हुई थी एंड ये जो कोविड का हुआ सारा जो सीन हुआ, उसकी वजह से व्हाट दे आर सेइंग इज दैट द रीजन व्हाई दे वांट टू पॉज इट इज बिकॉज देयर इज टू मच प्रोसेसिंग इन्वेंट्री. एंड थर्ड पॉइंट में व्हाट दे आर सेइंग इज जितने भी अभी प्रोसेसिंग इन्वेंट्री इनके पास पड़ी हुई है, दैट्स इनफ टू मीट द 2022 इन्विटेशन टारगेट्स, नहीं एडमिशन टारगेट्स. इसका मतलब जो लोग कनाडा में आ रहे हैं, इनवाइट्स अभी भी जा सकते हैं. इट्स जस्ट दैट दे विल नॉट बी कमिंग इन 2022. उसके बाद दे गो ऑन एंड एक्सप्लेन द बैकग्राउंड एंड रीजंस फॉर हाई इन्वेंट्री, जिसमें टीआर टू पीआर और सीईसी ड्रॉज हमने देखे थे 2021 में कितने सारे हुए थे, एंड दैट्स द रीजन फॉर सो मच इन्वेंट्री दैट दे हैव. देन नेक्स्ट पेज पे दे गो ऑन एंड एक्सप्लेन that they need to reduce the inventory to at least half before inviting anyone. अब क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है तो पहले 2021 टू 2023 टारगेट्स मल्टी ईयर प्लान उन्होंने बनाया था इमिग्रेशन का, दैट विल बी रिवाइज्ड फ्रॉम 2021 टू 2022 टू 2024 मल्टी ईयर प्लान. एंड उसके अंदर दे आर सेइंग दैट जो फेडरल हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, दे हैव टू रिड्यूस द टारगेट्स बाय 50%. तो पहले जो 111,000 इन्विटेशंस आते थे FSW के, that they are saying to reduce to about 55 to 60,000. And one of the reasons why they are saying this is that they want to accommodate other streams and priorities. अब वो other streams or priorities क्या है, that we'll know only in February when this plan comes out. But I'm assuming that it will be more TR to PR plans, more PNPs, and हम PNPs के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. But it could be other streams which could not be entirely bad. But yes, FHS draws जो हैं FHS workers के लिए, this may not be the best news. And for the first time they now mention that they may not be able to take any new intakes in the first half of 2022. Again, they are not saying they are just quitting everything, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा. They are just saying that इतने ज़्यादा targets हैं, इतने ज़्यादा processing inventory है हमारे पास, that they may not need draws till about May or June. उसके बाद दे टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग इन्वेंट्री विच इज 20.4 मंथ्स. जो एक्सप्रेस एंट्री होता था 6 मंथ्स में होता था, अब वो 20 मंथ्स में हो रहा है. सीसी स्टिल ओके. एंड इतनी ज़्यादा फाइल्स इनके पास बैक बर्नर पे हैं दैट द प्रोसेसिंग इन्वेंट्री मे राइज टू 3 years. अब ये क्लियर नहीं है कि दिस इज विद द एग्जिस्टिंग ड्रॉ फ्रीक्वेंसी दैट दे हैव, या फिर अगर ये ड्रॉज बंद कर देंगे तो हो सकता है वो 36 मंथ्स रिमेन्स एट 20 months. दैट इज नॉट वेरी क्लियर फ्रॉम दिस. बट वॉट वी आर सीइंग इज ऑब्वियसली 2 साल के आसपास प्रोसेसिंग लग रही है बिकॉज ऑफ ऑल द कोविड रिलेटेड डिलेज जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी. इफ फॉर इंस्टेंस जो हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा था, पहले पॉइंट में करंट स्टेटस के, जिसके अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग द टारगेट्स बाय 50% to 50%, that actually means that the CRS score will actually go up because there are less people being invited and बहुत सारे लोगों का अच्छा स्कोर होता है, बहुत सारे लोग कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के साथ हैं, बहुत सारे CEC वाले लोग हैं, and obviously the expected cutoff is expected to be 500 plus, and that's not a good thing. and इसके बारे में हम थोड़ी देर में और डिस्कस करते हैं from a solution point of view. एंड देन ऑन द लास्ट पेज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिडैक्टेड हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं हैं, बट इन द एंड दे ऑल्सो से दैट बाकी सब तो ठीक है, जो भी हम प्लान करते हैं नहीं करते हैं, कौन सी रिकमेंडेशन लेते हैं नहीं लेते हैं, PNP will still remain a priority. So जो 2022 to 2024 प्लान आएगा, there is a high likelihood कि PNP will be very very important in that, and that we'll see when the plan comes out in February.
Now the multi-year plan for 2022-2024 will be released in February and तब पता चलेगा इस मेमोरेंडम में से कितनी चीजें डेप्यूटी मिनिस्टर ने एक्सेप्ट करी है, क्योंकि ये अभी भी एक मेमोरेंडम है and not something that has been accepted and implemented. But if you are to believe what's written in this memorandum and ये अगर implement होता है तो हो सकता है जो targets हैं of immigration, not the overall but the foreign skilled, could reduce to half, जिसका outcome could be that the scores will shoot up to 500 plus. Now we'll know about this for sure in February, and like we said earlier, this is a video not about stating problems but providing solutions. So let's talk about solutions. What do we do if they reduce the targets for the next year? पहली बात तो आईआरसीसी ने एक भी बार अभी तक मेमोरेंडम में ये नहीं कहा कि ओवरऑल टारगेट्स विल रिड्यूस। जो 400,000 पर ईयर 1.2 मिलियन फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स वो वाले टारगेट रिड्यूस करने की बात नहीं करी है। सो आई थिंक व्हाट वुड हैपन इज द ओवरऑल टारगेट विल रिमेन द सेम बट द मिक्स बिटवीन दैट विल एक्चुअली वेरी। हो सकता है कि पीएनपी ड्रॉज ज्यादा निकाले हो, पीएनपी एप्लीकेशन ज्यादा हो सकता है सीईसी के लिए कुछ हो, टीआर टू पीआर हमने इस बार देखा था, देयर कुड बी बिजनेस इमिग्रेशन। सो व्हाट वी थिंक इज दैट दे विल कंटिन्यू टू invite people for permanent residencies, but the profile will vary, and let's talk about each of these possibilities in detail right now. सबसे पहले बात करते हैं पीएनपी के बारे में। अब इन द इयर्स 21 to 23 इट वाज एक्सपेक्टेड कि 80,000 पीएनपी कैंडिडेट्स को इनवाइट करेंगे। दैट मेक्स अबाउट 20% ऑफ द टोटल दे इंटेंड टू इनवाइट। हमारे हिसाब से दिस नंबर इज गोना इंक्रीज and also we feel कि इसमें और transparency बढ़ेगी। PNP was mentioned in this memo as well and they said they'll continue to invite PNP candidates and this can also be seen in the draws that came 2 days ago, so this is clearly a priority for them. हमने बहुत बार कहा है कि PNP is a very good way to immigrate but the lack of transparency is what makes it 50-50. But this lack of transparency has changed in the last few months. Let's see about Ontario. अब Ontario हमेशा से has been very very transparent, चाहे वो NOCs कौन से invite करने हैं उसके बारे में information हो या CRS scores कितने होंगे उसके बारे में information हो। They have been very regular as well. बीच में थोड़ा सा एक lag आया था but they have been inviting tech and professional workers in the range CRS range of 455 to 470 for a long time now, and this is still my, at least I would say it's still my favorite province when it comes to PNP, and if your score is in this range you still have a lot to look out for, but yes NOCs demand में होने चाहिए। उसके बाद Saskatchewan that has also been very transparent with their draws and the NOCs that they invite. अब SINP cutoff is as low as 67 बट उनका सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपकी एजुकेशन एंड आपका एक्सपीरियंस हैज टू बी रिलेटेड। अब इसके बारे में हमने सारी डिटेल एक वीडियो बनाई थी अबाउट Saskatchewan, you can check that out. Now talking about Alberta, which is the hot province right now when it comes to immigration. अब हमने बहुत बार डिस्कस करा है, हमने एक पूरी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि we personally don't like Alberta a lot when it comes to PNP because they are the most non-transparent PNP program, जिसमें वो NOCs भी नहीं बताते कौन से वाले आ रहे हैं and उनका जो क्राइटेरिया है on who they invite over others, that is not very clear. अब 2 महीने पहले हमने एक एफर्ट करा था अपने YouTube चैनल पे जिसके अंदर जितने लोगों को एल्बर्टा से इनवाइट आया है उनसे हमने NOCs मंगवाए थे एंड वी गॉट अ लिस्ट ऑफ NOCs अक्रॉस अबाउट 200 पीपल, जिसकी लिस्ट जो है दैट यू विल फाइंड ऑन आवर Instagram. इफ यू हैव नॉट चेक दैट, डू चेक दैट आउट, इट इज इन वन ऑफ द पोस्ट्स देयर. बट कुछ दिन पहले एल्बर्टा सरप्राइज अस विद अ न्यू इमिग्रेशन प्रोग्राम फॉर टेक वर्कर्स. अब हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि एल्बर्टा में टेक सीन इज ग्रोइंग एंड यू कैन सी दैट इन इमिग्रेशन एज वेल. And surprisingly, they were very transparent with this particular draw. They exactly knew what we are required. They did not say कि कितने ज़्यादा invitations देंगे, but let's see how that happens. But it's very clear which NOCs that you need and whether you need a job offer. Unfortunately, you do need a job offer for this particular tech draw to happen, but the NOCs are clearly mentioned there, and that's a good thing. And similar to this draw, BC has also been very transparent कि BC PNP के लिए they need, जो tech draw है उनका, they need a job offer from BC, and that's what is difficult for foreign workers until now, and इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. Another great news came when Prince Edward Island became the first province to give out their immigration draw schedule. अब अगर हर प्रोविंस से करे तो मजा ही आ जाएगा, बट आई थिंक जैसे जैसे पीएनपी की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी अदर प्रोविंसेस विल फॉलो दिस. एंड उसके बाद हमने एल्बर्टा, सस्कैचुअन पिछले पूरे साल में बहुत ज्यादा ऐसी न्यूज देखी जहां पे दीज प्रोविंसेस हु वर बेस्ड their application process was based on papers,
they are actually moving to online, and that is one step towards transparency and faster processing times, and that's a good thing. And all this has happened in the last 2 to 3 months, तो हम कह सकते हैं कि IRCC is leaning towards more PNP draws, जो 80,000 का target है per year, that may increase in future with all these news coming in. But if you are in the pool with a low score, keep an eye on PNP draws and how they are happening, and the best place to do for all PNP invitations together is cicnews.com. Now let's talk about option number 2, which is the Canadian experience class. अब यहाँ पे Canadian experience class के लिए दो तरह के लोग हैं. Number 1 is people who come on here on study visa. यहाँ पे 1 साल की पढ़ाई के बाद उनको 15 extra points मिलते हैं, and if they have Canadian experience they get added another 60 points, picking their scores above 500 easily. अब इसमें दूसरे तरह के लोग हैं who come here on intercompany transfer, work permit या फिर business immigration, जिसमें या तो उनके पास LMIA job offer होता है जिससे उनको 50 points मिलते हैं, या फिर they come here, they work here for 1 year and CC के अंडर they get more than 60 points and they increase their score to over 500. अब guys, हमने study के बारे में काफी बार डिस्कस करा है and we'll say it again, it's not a bad option, it's actually a really good option if you don't want to wait so long. So ज़्यादा दूर क्या जाना है. सिमरन के केस में सिमरन's sister is making 481 points because she's getting points for her age because she's less than 30. She has a master's degree. She has Simran's 15 points जो sibling points होते हैं. She also has a good IELTS score. Experience भी पूरा है and she's making 481 points. But because इतना ज़्यादा wait करना पड़ रहा था draws के लिए, so in September, I think August September, she actually applied for study permit 1 year and she's now coming in February. So we actually know firsthand how difficult this decision is because we are doing it. And बहुत लोग बोलते हैं study visa में या masters होने की वजह से they are rejecting visas, but that's not true. My sister already has a master, she has 5 years of experience and now coming here for a 1-year course from Seneca. अब रिजेक्ट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट नवजोत हेल्प्ड हर राइट एन अमेजिंग एसओपी जहां पे दे डिस्कस्ड कि व्हाई हाउ दैट कोर्स विल हेल्प हर. वो हमने अपनी स्टडी वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था. यू कैन चेक दैट आउट. एंड दैट इज व्हाट मैटर्स. ये कोई लक वक की बात नहीं होती है. यू नीड टू चूज अ वेरी गुड कोर्स दैट सूट्स योर क्वालिफिकेशंस एंड द एक्सपीरियंस दैट यू हैव, एंड देन यू नीड टू बैक इट अप बाय अ वेरी गुड SOP. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी एंड पूरी एक स्टडी इन कनाडा वाली सीरीज है. डू वॉच दैट, इट विल रियली हेल्प यू. एंड ऑनेस्टली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पे फॉर द एजुकेशन. आई टोटली अग्री कि उसमें खर्चा होता है, बट इफ यू प्लान ऑल दिस रियली वेल, एंड वी हैव मेड दिस वीडियो विद गुर साहिब जहां पे ही वाज एबल टू पे डाउन हिज एंटायर लोन, एंड ये सिर्फ गुर साहिब ने नहीं करा. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू दैट, हु कम हियर एंड दे बिकम डेट फ्री. एजुकेशन लोन पूरा खत्म हो जाता है बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर एजुकेशन, और मैक्सिमम 1 year आफ्टर. सो इट्स टोटली पॉसिबल. Yes, मेहनत करनी पड़ेगी, and that example is perfect when I applied that to my sister. So Simran's sister is coming. My cousin sister is also here. She is a chef, but that's a different story. But she is doing the same. She's actually paying for her second year herself. And then there are people who come here on work permits. Mostly intercompany transfers होते हैं, but पिछले कुछ टाइम से we've been seeing people and coming across people जो कि इंडिया में बैठे हुए उन्हें जॉब मिलती है, and for sure they have excellent networking skills and unique profiles जिस वजह से उन्हें यहाँ पे जॉब मिल रही है. But one thing is for sure, it's not gonna happen if you just apply for jobs sitting behind your laptop on Indeed, LinkedIn or Job Bank. It only happens if you have exceptional networking skills, and that's what is required. And that's exactly what I teach in my 2-day workshop, which is called First Job Accelerator, जिसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस करा है. एंड वैसे तो इस वर्कशॉप में ज्यादातर लोगों के पास COPR, AOR सब कुछ होता है. They are either here or they are waiting for their COPRs. But last month there was one candidate who actually got a job sitting outside of Canada in BC, and now he's applying through BC PNP. It's 100% possible, but we need to understand how to network in Canada. And Navjot puts a lot of work in this workshop, and it's not about money. In fact, अगर आपको workshop पसंद आए, you will get 100% refund for this. If you want to check it out, the link is in the description below. And once you get a job in Canada, it becomes really easy thereafter, because when you come here on a 3-year work permit or 2-year work permit, after 1 year, like we said, you'll get 60 plus points, and then you'll go through CEC draw and you'll have more than 500 points. But the thing here to note, really important, is do not fall prey to all these consultants and immigration agents who are giving fake jobs. Please do not do that. Please do not go on Job Bank and apply for a job and 10-12 lakh में job मिल रही है. Do not fall prey to that. Do it the right way. Learn how to network, because
एक चीज तो बहुत ज्यादा हमने पहले भी डिस्कस करी है, अभी पीछे भी एक वीडियो में हमने डिस्कस करा था, दैट देयर इज अ डिमांड फॉर स्किल्ड वर्कर्स इन कनाडा। इमिग्रेशन भले ही कम हो रही है बट डिमांड कम नहीं हुई है। देयर आर सेवरल रिपोर्ट्स दैट से दैट दे नीड 1 million, there are 1 million unfilled jobs right now in Canada. So jobs are there, it's just that we need to have the right approach, and Canadian employers, because of these unfilled jobs, will certainly be open to give work permits, especially Alberta में जहाँ पे they have actually come up with a tech worker draw which requires a job offer in Alberta that clearly says that there's more demand, especially for tech workers and professional workers. And now finally the last part of this contingency plan, which is the business visa. अब इस पे हमने एक पूरी सीरीज बनाई थी 2 महीने पहले, यू कैन चेक दैट आउट। बट बिजनेस वीजा इज नॉट फॉर एवरीवन। इसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक बहुत सारा पैसा एंड दूसरा यू नीड टू हैव अ एक्यूमेन फॉर बिजनेस। अब इस पे वील नॉट डिस्कस अ लॉट। हमने 2 महीने पहले भी एक सीरीज बनाई थी एंड वी आर कमिंग विद अनदर सीरीज ऑन बिजनेस इमिग्रेशन soon, and we really think that this is a great option and is likely to grow as Ontario also came up with a business stream a few months ago. अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव बातें बोलते हैं कनाडा के बारे में, सिर्फ अच्छा ही बोलते हैं, नेगेटिव हम कुछ नहीं बोलते, एंड दैट वी डू बिकॉज वी बिलीव इन सॉल्यूशंस एंड वी डोंट लाइक टू स्टेट problems, and that's exactly what we wanted to do in this particular video. And हमने बहुत बार बोला है that Canada is not the end of the world and you can do well anywhere in this world on earth if you have the right positive attitude. Last takeout. What would we have done if we were in India right now? Now, there are 3 options. Number 1 is study visa for me. Ab now, I really like to study. I would have taken up a course that would have added to my current skills. And Navjot ko milta open work permit and wo job karta and we would have made ends meet. Number 2 option was work permit for me. अब मैंने एक ही कंपनी में इंडिया और हांगकांग में 8 इयर्स तक काम करा है एंड देयरफॉर उनका ऑफिस जो है वो कनाडा में भी है एंड आई वुड हैव ट्राइड टू डू दैट। अब सिमरन को भी जॉब मिल सकती थी, बट अगेन व्हाट मैटर्स व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर वर्क परमिट इज नेटवर्क व्हिच वाज स्ट्रॉन्गर फॉर मी। Number 3 is अगर कुछ ना होता तो we would have stayed in India and continue doing our business. And अगर इंडिया में नहीं रहना होता तो नवजोत would have explored a job in either Singapore or Dubai. वहाँ PR नहीं मिलता, but चलो that was still an option for us. And that was our take on the memorandum that we had. We did not want to make a problem वाली video. We wanted to make a solution oriented video. I'll not say अगर video अच्छी लगी तो like करना, because I know this was not very good news. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।